to help students interact with sir. Please switch on your videos and mics as asked. Thank you. Okay. Is my screen visible to all? Yes, sir. So I have named the session as Maximizing Performance in JEE Main January 2024. The reason is already you must have prepared all your syllabus, physics, chemistry, mathematics, class 11, class 12. आप सब लोग कर चुके हैं और मैं इस सेशन में कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बताने जा रहा हूं कि अब जो लास्ट के आपके पास जो वीक 10 days का टाइम बचा हुआ है, यू शुड डे एंड नाइट focus on your studies and learn new things. No. The only thing is, जो अभी तक आपको पता है, जितनी चीजें आप अभी तक कर चुके हो, प्रैक्टिस लर्न कर चुके हो, उसी में हम आउटपुट कैसे एग्जामिनेशन में अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन आई विल इंक्लूड some of the facts. So now on your screen, you can see that I have listed some points related to the cutoff scores. I have considered previous 5 years data and majorly I will focus on 2023, the last one. So if you see the cutoff, this is the percentile ranges which are mentioned in the table. For general category, it is 90.77 percentile. प्लीज सब लोग इस बात पे ध्यान देंगे. These are not the percentages of the marks. These are the percentiles. Percentile means कि अगर किसी बच्चे का 90 percentile है, that means of the total students who are going to be who have appeared in that particular examination, 10% students are above that student. So these are the cutoff percentiles category wise, and if I convert them into the marks, the cutoff marks. So this 90.77 is roughly 70 marks. ये हर साल थोड़ा बहुत वेरी करता है, 5-10% का आप इसमें मार्जिन ले सकते हैं, but more or less I am taking the average, so it is 70 marks. And if you calculate the percentage of these marks among the total JEE main, that comes out to be roughly 23.3%. और मुझे लगता है सारे बच्चों को ये बात पता होगी कि बोर्ड एग्जाम्स में भी जो परसेंटेज मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स, आई थिंक दैट इज 33% स्टिल. सो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ जेईई मेन इज बिलो दैट परसेंटेज. तो जस्ट मैं एक सारे बच्चों से एक पूछना चाहूंगा कि जेईई मेन में क्या लग रहा है, कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन और इट इज एन इजी एग्जामिनेशन. Any student? As compared to 33% marks in board exams, here you only require 23.3% marks. Any student wants to answer? Is it a difficult or an easy examination? No student wants to answer. Okay, no issues. Let's move forward. तो अगर मैं परसेंटाइल ले लूं 99 percentile, which is a very good percentile, and the rank and the college prospects जो 99 percentile पर है वो sufficiently NITs में core branches आपको बहुत easily मिल सकती हैं. तो इसका जो एक रफ डेटा है, that is 151 marks. This is roughly 50%. ये वो परसेंटाइल मैंने कैलकुलेट किया है जिस पर जो रैंक है दैट इज समवेयर अराउंड 8000
और समवेयर अराउंड 8,500 टू 9,000 की रेंज में ये वेरी करेगी, जिसमें आपको एनआईटीज, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, एंड उसमें भी कोर ब्रांचेस से मेरा मतलब है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो द पॉइंट इज कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को देखें, जो एक जनरली बच्चों के मन में होता है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन होगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हाउ कैन वी एक्सेल इन दिस अटेम्प्ट, द एग्जामिनेशन इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट यू रिक्वायर अ डिफरेंट अप्रोच फॉर दिस एग्जामिनेशन। मैं आपके संग अभी आगे पोर्शन में कुछ पीवाईक्यूज भी टेकअप करूंगा रिलेटेड विद द फिजिक्स सब्जेक्ट, कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। जस्ट मेरा यहां पर अभी पर्पज है टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द वेयर अबाउट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। These are some of the topics. If you have a pen and paper, you can note down. These are the list of the topics which we have segregated from last 5 years, that is from 2019 onwards, जिनके ऊपर number of questions in multiple exams. Why I'm saying multiple exams? Because every year JEE Main get conducted in two parts. One is the January attempt in generally, then in April, और जनवरी अटेम्प्ट में भी लगभग इसके 12 to 14 सेशंस होते हैं, और ऐसे ही अप्रैल में भी इसके 10 to 12 सेशंस होते हैं। तो उन सभी सेशंस का जो एक एवरेज कैलकुलेशन है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, उसके बेस पर इन टॉपिक्स को हम लोगों ने सेग्रीगेट किया हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इसको अरेंज किया है। सो द मैक्सिमम परसेंटेज या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। Then we have system of particles, rotational motion, semiconductors, and so on. Right? So if you can write it down, you can write it down, or else we can share this information post the session. Similarly, in chemistry, the biomolecules, polymers, chemistry in everyday life has the highest weightage, then S block elements, hydrogen, and so on. Likewise, in mathematics, the matrices and determinants, 3D geometry, limits, continuity, differentiability, sequences and series, definite integrals, and so on. And mind it, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस जेई में पूछे जाते हैं। ये मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जिन पर हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक 2019 ऑनवर्ड्स पूछे गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो और टॉपिक्स पर भी होंगे, बट दीज टॉपिक्स कैरी दी मैक्सिमम वेटेज। नाउ अभी हम जैसे पीछे बात कर रहे थे कि जेई मेन इज अ डिफिकल्ट एग्जाम और जेई मेन इज अ मॉडरेट एग्जाम और एन इजी एग्जाम। So this is the criteria, this is the total number of questions which were asked in particular exam. Like in 2019, all sessions, all sets, 2020, all sessions, all sets, and so on. तो अगर मैं इन सभी एग्जामिनेशंस का, इन सभी सेशंस का एक एवरेज लेकर चलूं, सो इजी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं परसेंटेज वाइज कन्वर्ट करूं, तो दैट कंप्राइजेस ऑफ 47% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो अगर मैं इस 47% को मार्क्स में कन्वर्ट करता हूं, तो इट कम्स टू नियरली 141 मार्क्स, एंड इट इज रफली 35 क्वेश्चंस। I think you all must be aware in a JEE main examination, each question carries +4 marks. So that's why अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब एवरेज के टर्म्स पे लेकर चलूं, तो it is 141 marks and 35 questions. And if I take it moderate, the percentage of the moderate questions average of these 5 years is 48%. ये भी आपको बता दूं, what we have considered easy question. The easy question means 1 or 2 liner questions, like the only question in which you have to simply put the formula, substitute the values and get the answer. Moderate questions वो questions हैं जो एक या दो स्टेप की कैलकुलेशन या कहीं पर थोड़ी सी मिक्सिंग है। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑब्वियसली ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन,
थोड़ा सा थिंकिंग, डीप डाइविंग, उन सबकी रिक्वायरमेंट होगी. एंड सरप्राइजिंगली द डिफिकल्ट परसेंटेज इज ओनली 5% of the total marks. Means moderate 144 marks and difficult, out of this 5%, it is only 15. अब जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे हम थोड़ा सा रिस्क भी लें, तो मैंने छोटे से इसमें एनालिसिस ये करी कि सपोज करते हैं हम लेते हैं 141 टोटल मार्क्स ऑफ द इजी क्वेश्चंस और हम मॉडरेट क्वेश्चंस के 144 का हाफ ले लेते हैं. ये टोटल मार्क्स आते हैं 213. और जो मैंने पीछे आप लोगों को डेटा दिखाया था ऑफ द 99 परसेंटाइल, दैट मार्क्स वॉट 151. द ह्यूज डिफरेंस. आप कहोगे नहीं सर इजी तो ठीक है, मॉडरेट में सर 50% भी इट इज वेरी डिफिकल्ट. कोई बात नहीं, इसका 40% भी ले लेते हैं. 141 और मैं 40% ले लेता हूं दिस मॉडरेट पोर्शन का, इट कम्स अप्रोक्सीमेट 199, स्टिल ऑन अ हायर साइड. तो मेरा पर्पस ये है आपको ये डेटा बताने का कि एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट कि इट रिक्वायर्स some techniques, some approach, and some examination temperament to be in the top list. Okay. Now let's move forward. This is the breakup of class 11th and class 12th physics. The subject wise मैंने breakup किया है 11th और 12th का. तो अगर मैं once again पूरा average लूं तो physics it is approx, just changing the color, physics it's approx 45% class 11 and 55% class 12. ईयर ऑन ईयर ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है. किसी ईयर में मतलब प्लस माइनस आप इसमें 5% का मार्जिन रख सकते हैं. किसी ईयर में 11 का परसेंटेज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 12 का कम हो जाएगा, बट मोर और लेस इट विल रिमेन इन दिस रेंज. सिमिलरली if we go to chemistry, so on an average chemistry में 11th class का percentage this is 44% and class 12th percentage this is 56%. And likewise in mathematics class 11 is again 45% and class 12 is again 55%. तो अगर हम on an average देखकर चलें तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 11 परसेंटेज इज 45% एंड 12 परसेंटेज इज 55% अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स. प्लस माइनस 5% का वेरिएशन ईयर ऑन ईयर सेशन वाइज भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जनवरी में फॉर एग्जांपल देयर आर 12 सेशंस ऑफ द एग्जाम, तो हो सकता है किसी एक सेशन में 11 का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा आ जाए, 12 का परसेंटेज थोड़ा कम आ जाए, बट ऑन एन एवरेज देखेंगे तो इसी रेंज में आपका ये परसेंटेज मार्क्स रहेंगे. Till here, any student has any query? Am I audible to all? Yes, sir, you're audible. Till here, any student has any query? No, sir. So let's move forward. Now, this we have segregated some high and medium priority topics which are based on the frequency of questions जो अभी तक 2019 till 2023 पर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए. मैं आप लोगों को एक क्विकली इसकी एक लिस्ट शेयर करता हूं. Is the list visible to all? Is the list visible to all? Yes, we can see this. Yes, sir. So दो टॉपिक्स इसमें ग्रीन कलर से अंडरलाइंड हैं, दे आर हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स. और जो इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं रेड कलर से हैं, दे आर वेरी सेल्डमली आस्क्ड. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया,
पूछे गए हैं क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, बट वेरी सेल्डम। तो इट्स बेटर कि आप लोग इसमें जो रेड कलर से हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उनको आप नोट कर लें, बिकॉज ये आप जो ग्रीन वाले हैं ये लिस्ट ज्यादा लंबी है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इट्स बेटर कि जो रेड कलर से हाईलाइटेड हैं आप उन टॉपिक्स को नोट करें। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन वी कम रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, addition and subtraction of vectors, motion in a plane with constant acceleration, और इज इट बेटर कि हम इसको आपके संग आफ्टर द सेशन में आपको ये लिस्ट शेयर कर दूं? यू नोट इट डाउन राइट नाउ, और मैं इसको लिस्ट को शेयर कर दूं बाद में? व्हाट वुड बी बेनिफिशियल? Sir, you can share it as well. We'll share it with the students later. ओके मैम, थैंक यू। तो मैं जस्ट एक क्विक आपको इसका गो थ्रू दे देता हूं कि किन के टॉपिक्स में क्या क्या है। जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच आर वेरी सेल्डमली आस्क्ड, इन रोटेशनल मोशन दिस थ्री टॉपिक्स एंड सो ऑन। तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर है, सब टॉपिक जरूर है हर चैप्टर के अंदर, जिसमें आप थोड़ा सा ये डिसाइड कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द टाइम लेफ्ट आप किन पोर्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करें, किन पोर्शंस को आप थोड़ा सा बैकड्रॉप पे ले सकते हैं। सी द पॉइंट इज, जो हमारा ये सेशन का पर्पज है उसका पर्पज ये है कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रांग बनाने में आपको एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा, बट जो आपके टॉपिक्स स्ट्रांग हैं और जो टॉपिक्स आपके मॉडरेट लेवल पर हैं, इन बचे हुए दिनों में आप उन टॉपिक्स को मोर स्ट्रांग और मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट? सो दिस लिस्ट आई विल शेयर विद द coordination staff and they will share with you, right? So let's move on to the next part. ये भी आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली एनटीए ने कुछ चेंजेस किए हैं इन द सिलेबस। सम पोर्शंस हैव बीन डिलीटेड एंड सम पोर्शंस हैव बीन एडेड। तो मैं आप लोगों के साथ एक बार वो लिस्ट भी शेयर करता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पोर्शंस रिसेंटली एनटीए ने ऐड किए हैं या एनटीए ने रिमूव किए हैं। सो इसमें आप देखेंगे टेबल में देयर आर टू कॉलम्स, वन इज द एडेड पोर्शन एंड द सेकंड वन इज द डिलीटेड पोर्शन। सो जो डिलीटेड पोर्शन है यू कैन लीव दोस टॉपिक्स, अब आपको उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर एनटीए देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। बट इसमें एक कॉशन है, ये जो टॉपिक्स हैं ये डिलीटेड पोर्शन है फ्रॉम द जेई मेन सिलेबस। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो जेई मेन में डिलीटेड हैं, but they are very well in the syllabus of JEE Advanced. So for now, you can take the risk for these topics, but ultimately for your JEE Advanced, आपको इन टॉपिक्स पर फोकस करना ही होगा। These are for the from the class 11. For example, this Doppler effect, this topic is included in JEE Advanced, not in JEE Main. And these are the topics included in class 12. Right. So these two lists I will share with all the students through this on the chat or through the mail, right? So now let's move to second part of this session, in which I am going to take up some PYQs. Now एक चीज आप सब लोग ध्यान रखिए, मैंने जो ये PYQs लिए हैं इनका मेरा बेसिक पर्पस है, आपको अभी मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ानी, वो आप सब लोग पढ़ चुके हैं। मेरा पर्पस है आपको ये चीज समझाना दैट कंपटीशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन, नॉट सिलेक्शन। 15 लाख to 16 लाख स्टूडेंट्स हर साल जेई मेन में अपीयर होते हैं, और उसमें अगर आप सक्सेस रेट देखोगे तो सक्सेस रेट इज ओनली 4 to 5%। तो जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कहीं कहीं बीच बीच में ट्रैप्स रखे जाते हैं, जिसमें कि अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी कैजुअल हुए सो ऑब्वियसली आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग मार्क करेंगे, और वहीं पर आपको इंस्टेड ऑफ गेटिंग +4 -1 मिले।
कई बार क्या होता है ना कि जब हमने प्रैक्टिस की होती है तो कई सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं. मार्क माय वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट क्वेश्चंस, आई एम सेइंग सिमिलर क्वेश्चंस. बट उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मिसिंग होती हैं. जैसे एक बड़ा कॉमन सा होता है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस. तो ये जो आपके असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें अगर आप देखो तो जनरली हमें ये आदत होती है कि फर्स्ट ऑप्शन असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, assertion and reason is the correct explanation, assertion is correct, reason is correct, not the correct explanation, assertion is wrong, reason is correct, assertion is correct, reason is wrong. This is जो ये यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, this is the common assertion reason options जो जनरली आपको क्वेश्चंस में, जनरली आपको बुक्स में प्रैक्टिस में मिलेगी. सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको निकाल सकते हैं. ऑल्दो ये मैंने एक पीवाईक्यू लिया हुआ है, बट जो हीट इंजन है वो अब इसके सिलेबस से रिमूव हो चुका है. बट अगर आप इसमें देखो तो इसमें वही आपके सारे असर्शन रीजंस के ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपको इन कॉमन आप प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं, लाइक दिस, राइट. क्या कोई मुझे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर दे सकता है? एनीवन? either through chat or through verbal speaking, can any student answer with this, the answer of this question? कोई भी बच्चा जो शेयर करना चाहे. I'm sure we have very brilliant students at all the JLVs. Very competitive. I know you are guys at. Anybody, please. Even I want to know the answer. Okay, let's move on to the answer. The correct answer is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Now, अब इसी के कंट्रास्ट में आप देखो सेकंड क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट ऑप्शंस आप देखेंगे यहां पर चेंज हो गए. स्टेटमेंट वहां पर क्या था, स्टेटमेंट मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यहां फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. तो क्या होता है कि जैसे हम असर्शन, ये असर्शन रीजन हम कर रहे हैं, एक ही पेपर में दो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं. हमने असर्शन पढ़ा, रीजन पढ़ा, पहले क्वेश्चन में शुरू के चार ऑप्शंस पढ़े. हमें दिखा दी दीज फोर ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन इज दिस वन, assertion correct, reason correct. सेकंड ऑप्शन में assertion correct, reason correct, not the explanation. थर्ड ऑप्शन में assertion false होता है, फोर्थ ऑप्शन में reason false होता है. बट यहां पर ऑप्शंस चेंज हो गए. फॉर एग्जाम्पल आपका इसका आंसर आया स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. आपने कहा अरे ये तो ऑप्शन नंबर वन होता है, आपने ऑप्शन वन पे टिक कर दिया. पर जैसे ही आपने ऑप्शन वन पे टिक किया, यू विल बी अवॉर्डेड -1. यही लिखता है ना इंस्ट्रक्शंस में कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर you will be awarded +4 marks, and for every wrong answer you will be awarded -1. तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while reading the options. एक ही पेपर में अगर दो assertion reason के क्वेश्चंस होंगे तो इन बोथ द क्वेश्चंस इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके ऑप्शंस शफल्ड हों. सो बी केयरफुल while observing the options and marking the answer. Next, let's move on to this question. The screw gauge and vernier calipers, two instruments, are very important both for JEE Main as well as for JEE Advanced. So if I consider this question that in a screw gauge there are 100 divisions on the circular scale, and the main scale moves by 0.5 mm on a complete rotation of the circular scale. The zero of the circular scale lies 6 divisions below the line of graduation when two studs are brought in contact with each other. When a wire is placed between the studs, 4 linear division scale divisions are clearly visible, while 46th division, the circular scale, coincide with the reference line.
the diameter of the wire. This is a numerical type question. 20 questions are single choice questions and 10 questions are numerical type questions in each subject. And out of those 10, you have to solve only 5 questions. Now, अब screw gauge questions में, if you see, the most important thing, we have 3 parts. One, we require a main scale reading. Then we require the least count. And we require the zero error. तो अगर मुझे इन तीनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, we will easily calculate the reading of the screw gauge. Now, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो आपको मेन स्केल रीडिंग क्लियरली इसमें विजिबल है, गिवन है that 4 linear scale divisions are clearly visible. That means your main scale reading is 4 multiplied by the obviously the 0.5, but the main scale reading is clearly given. For calculating the least count, आपको information दी है that there are 100 divisions on the circular scale and each division moves in one complete rotation, it moves 0.5 mm. So very easily you can calculate the least count as 0.5 divided by 100. Now the point is, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी जीरो एरर मेंशन्ड नहीं. अब जीरो एरर पे देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. जीरो एरर हो सकता है जीरो हो, जीरो एरर हो सकता है पॉजिटिव हो, जीरो एरर हो सकता है नेगेटिव. और अगर जीरो एरर में ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी तो ऑब्वियसली हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी. तो कैन एनीबॉडी गेस कि इसमें जीरो एरर आपको दी है या नहीं दी है? एनीवन? और अगर जीरो एरर इसमें गिवन है तो वेदर इट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर और इट इज अ नेगेटिव जीरो एरर. വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? പോസിറ്റീവ് കുറയ്ക്കും. ഇത് ശിവരേന്ദ്രൻ. Okay, so the line given, the scale lies 6 divisions below the line of graduation. So the zero error is actually the positive zero, because 6 divisions below the line of graduation, that is the reference line, that means it is a positive zero error. So our final reading answer will become main scale reading plus the division which is coinciding is 46 multiplied by least count, and since it is a positive zero error, we will subtract -6 multiplied by least count. So the answer will be obviously 220. Got it? Now, a similar type of question, this one. The least count of main scale of a vernier calipers is 1 mm. Its vernier scale is divided into 10 divisions and coincide with 9 divisions of the main scale. When jaws are touching each other, the 7th division of vernier scale coincides with the division of main scale, and the zero of vernier scale is lying right side of the zero of main scale. When this vernier is used to measure length of a cylinder, the zero of the vernier scale lies between 3.1 centimeter and 3.2 centimeter, and 4th VSD coincides with the main scale division, the length of the cylinder. Now see, the confusing part, least count. अब पहली बार में क्वेश्चन अगर हमने पढ़ा, दिमाग में आता है कि भाई लीस्ट काउंट तो दिया हुआ है, बट हियर इज अ कैच. This is the least count of the main scale. This is not the least count of the vernier calipers. The least count of main scale and least count of vernier calipers are different. So how do we calculate the least count of vernier caliper? 1 MSD. I hope MSD everybody is familiar. Main scale division minus 1
VSD. So 1 MSD is given to you, that is 1 mm. VSD is 9 by 10 because 10 vernier scale divisions are coinciding with the 9 divisions of the main scale multiplied by 1. That comes out to be 0.1 mm. अब रीडिंग हम आराम से निकाल सकते हैं. That is the main scale reading plus x into least count. अच्छा, जीरो एरर इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नहीं है? एनी स्टूडेंट? जीरो एरर इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और देयर इज नो जीरो एरर. The genuine Algonda says it's a positive error. The positive error. Very good. Because it is mentioned that zero of vernier scale is lying right side of the zero of main scale. Means when we are closing the studs, the two scale zero has not coincided yet. So that's why it's have a positive zero error. And obviously we will subtract this positive zero error. तो कई बार आप PYQs देखेंगे तो वहां पर कई सारे ऐसे PYQs हैं जिसमें डायरेक्टली आपको दिया हुआ है पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर या नो जीरो एरर. बट समटाइम्स आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करके देगा. So you have to be very careful while reading the questions. Okay. So next move on to the next question. Here I would suggest कि पहले all the students must solve this question and give me the answer. Then I'll take the solution. Giving you 2 minutes to solve. I think the students are not carrying the pen and paper. So if you can solve it verbally, or if you are carrying the, please take it out. We have answer in the chat box. Yeah, sure. They're saying it's B, It's towards B, northeast. towards northeast. Okay. Okay. One option, one vote for option B. Anybody else? So very simple question. The average acceleration is change in velocity divided by the time taken to change that velocity. Even I'm trying to solve since like it's been a long time since I solved any class 11th and 12th physics questions. But ma'am, please don't have students. Let them I solve by can't themselves. The JNV students. JNV students are very more, smarter than me. Yeah. JNV Mata also says B. We have four schools telling the answer as B. B. Okay. So I think कि सभी बच्चों का जो वोट है वो बी पर है. ठीक है, तो जरा एक बार अब इसको सॉल्व करते हैं. पहले जरा मैं क्वेश्चन पढ़ लूं. A particle is moving eastwards with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northwards. The average acceleration in this time is, right? So I hope all of you must be aware that we can draw
east, west, north, south. Now our particle, it is moving with a velocity 5 meter per second towards east. This is the initial velocity. And now it changes the direction of velocity towards north. Again, it is moving 5 meter per second. This is our final velocity. Now, what is the interesting part in the question is that it is asking about velocity. Velocity is a vector quantity. किसी भी वेक्टर को चेंज करने के there are two ways. Either you change the magnitude or you change the direction. Obviously, if you both change the magnitude and direction as well, तब तो वेक्टर चेंज होगा ही होगा. अगर मैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखूं और डायरेक्शन चेंज करूं तो भी वेक्टर चेंज होगा. और यदि मैं वेक्टर का डायरेक्शन सेम रखूं और मैग्नीट्यूड चेंज करूं तो भी वेक्टर चेंज होगा. इस क्वेश्चन में हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ. सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर, so we will write in vector form v final minus v initial, and the value will be 5 j cap minus 5 I cap, because we are considering the horizontal as the x-axis and perpendicular to that x I am considering the y-axis. Now the formula for average acceleration, since acceleration is also a vector quantity, so it is v final minus v initial divided by time. The change in velocity divided by the time taken to change that velocity. So the answer will become 5 j cap 5 I cap upon 10. So the average acceleration in vector form, it is half j cap minus half I cap. If I calculate the magnitude of this acceleration, obviously it will be half, which is written in all these three options A, B, and C. But focus on direction. Positive j cap means north, and with I cap a minus sign is written. That means this is minus I cap. Minus I cap means west. So the answer is northwest. Got it? So the answer is C option, northwest. अब आप लोग ये देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ एक माइंड में सेट हो गया कि भाई वेलोसिटी ईस्ट में है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में मोशन हो रहा होगा. बट एक चीज हम भूल गए कि वी आर कंसीडरिंग द चेंज इन वेलोसिटी. सो व्हेन वी टेक द इनिशियल वैल्यू माइनस, द डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट विल रिवर्ट टू वेस्ट. और यही अंतर आता है जब आपका क्वेश्चन आपने बी किया, यू आर फुल कॉन्फिडेंट, +4 मिलेंगे, बट मिले कितने? -1. That means a difference of 5 marks. Got it? Now, let's move on to this question. Rotational motion, as a physics teacher, I have 22 years experience of teaching physics. मुझे लगता है कि हर बच्चे का एक सबसे डिफिकल्ट पोर्शन अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो उनका सबसे पहला जो नाम दिमाग में आएगा, that is the rotational motion. Am I right? Students can raise the hands if I am right. Okay. So this is the question to calculate the moment of inertia. अब आपको एक चीज बताता हूं, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन एक जेईई मेन में दूसरे पेपर में रिपीट हुआ है. वो भी मैंने क्वेश्चन, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस पर हम इसको
टेकअप करेंगे। देखो, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका फॉर्मूला होना चाहिए 1/6 mh², 1/3 mh²। बट पॉइंट ये है कि ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल हम ना पढ़ते हैं ना डिराइव करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे ट्राइंगल एबीसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन टू यू, दैट इज द आई नॉट, इट इज गिवन। और ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एक छोटा वाला पोर्शन है, दैट इज द पोर्शन डी ई एफ, अगर हम इस पोर्शन को रिमूव कर दें, और रिमूव कर देंगे तो हमारे पास पोर्शन क्या बचेगा, एडीई, बीडीएफ एंड एफईसी। इन जो बचे हुए पोर्शंस हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब एक सिंपल सी चीज सोचते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें। हर छोटे छोटे का निकाल लें, कहीं ना कहीं हम या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। बट इसको करने का एक बहुत छोटा सा तरीका है। छोटा तरीका क्या है, हम सबको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज समवेयर प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द डायमेंशंस स्क्वायर। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को k ले लेता हूं। So my moment of inertia I naught will be k ml square, where k will be as some number. It can be 1/2, 1/3, 1/18, 1/4, anything. It can be any number. Now, अब जब मैं इस DE पर आऊंगा, DEF ट्राइंगल पर, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रूल से मुझे यह पता है कि इफ द साइड लेंथ ऑफ AC is L, the side length of DE will be L/2। क्योंकि जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं, हमने उन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है। तो जब हम इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे सो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो लेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी। अब ट्राइंगल का जो मास होगा, द मास ऑफ द ट्राइंगल दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड एरिया इन टर्न इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। Somebody is saying, hello, somebody is saying anything? Anything you want to ask, students? I think they unmuted themselves by mistake. You may continue. Okay, Sir. no issue. Okay. So now mass is proportional to area and area is proportional to the square of the length. So when the length is reduced to half, obviously the new mass will reduce to 1/4. So the moment of inertia of the triangle DEF will become same proportionality constant K, because the symmetry is there in figure, multiplied by m/4 L/2 whole square just a moment. This is K m/4 L/2 whole square, that is I naught by 16. So our required moment of inertia, I required, is simply I naught minus I naught by 16, that comes out 15 I naught by 16, which is the answer, option A. Right? अब ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन ऑफ अ ट्रायंगल। इसी में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जेई मेन में फिर पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, ईयर ऑन ईयर रिपीट हुए। अब कंडीशन में थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, डिफरेंट कर दिया। एबीसी इज अ प्लेन लैमिना of the shape of an equilateral triangle
D and E are midpoint जैसा पहले था. AB, AC and G is the centroid of the lamina. Moment of inertia of the lamina about an axis passing through G and perpendicular to the plane ABC is I naught. If the portion ADE is removed, the moment of inertia of the remaining part about the same axis is n I naught by 16, where n is an integer value of n. थोड़ा सा चेंज क्या किया कि इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द मिडिल ट्राइंगल, इन्होंने एक ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ADE उसको रिमूव कर दिया. अब इसमें भी हम चलेंगे वही. We will solve this question with the help of symmetry. Now see, let's take, this is your triangle. This is A, B, C. This was DE, which is given to us, and this F. मैंने इस फिगर को पूरा पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके फिगर से कंपेयर कर दिया. हमें ये पता है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ IABC is I naught. That is mentioned in the question. और जब हम लोगों ने पीछे वाली क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो हमारे पास रिलेशन आया था IDEF that was equals to I naught by 16. Got it? Mass will become 1/4 and length will become half. अब जरा देखो, हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं, ADE, DBF and EFC. तीनों triangles with respect to centroid point G are symmetrical हैं. That means I assume that moment of inertia of ADE, moment of inertia of BDF, moment of inertia of EFC to be I1. That means 3I1 and I naught by 16 will together give me the moment of inertia I naught. अगर स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट इट. ओके, तो 3I1 is I naught minus I naught by 16, that is 15 I naught by 16. So I1 is simply 5 I naught by 16. Now, what is required? हमें चाहिए था moment of inertia of this portion because ADE is removed. And simply you can write this is 2I1 plus I naught by 16. What I am trying to say is कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन आपको करनी है ट्राइंगल की. इट इज नॉट नेसेसरली कि आपको ट्राइंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन याद हो. सिमेट्री है तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो हमसे करवाना क्या चाह रहा है. अगर हम इसमें छोटा सा एलिमेंट लें, एक्स डिस्टेंस पे DS थिकनेस का रॉड ले लें, फिर उस रॉड के कॉरेस्पॉन्डिंग DM मास निकालें, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करें, इट विल कंज्यूम टाइम. बट द क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो इस तरीके से है कि आप उस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. सो द आंसर विल बी 11 I naught by 16. Now, this is the next question which I have taken on gravitation. और इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा जो सिंपल सा एक पर्पस है वो ये कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होता है that gravitational field intensity is given minus K by R square, and this is related with the potential gradient as minus dV by dr. So dV will be K upon R square into dr, and you can simply integrate. But hold on, इस क्वेश्चन में भी एक कैच है. आपसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है,
आपको पोटेंशियल का इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है पोजीशन पर, दैट इज 10 जूल पर केजी। तो व्हेन यू इंटीग्रेट, इट विल बी डेल्टा वी माइनस के बाई आर within the limits 2 to 3. But delta V is V minus 10. So this V you have to calculate, not the potential difference. क्योंकि जनरली जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में डायरेक्टली हमें आदत होती है सॉल्व करने की पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहां पर क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द फाइनल पोटेंशियल। Now, this is a question which is information based. The correct relation between Poisson ratio, bulk modulus, and modulus of rigidity of a given solid object. अब ये क्वेश्चन या तो फिर आप वही करो कि भाई जब आपके पास सारे वैल्यूज हैं, सारे फॉर्मूले हैं, आप उनको लिखो, उनको डिराइव करो। अदरवाइज अगर आप देखोगे अपनी बुक्स में या कहीं भी एनसीईआरटी के अंदर आपको इनके रिलेशंस दिए होंगे। सो दिस इज अ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड डायरेक्टली द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला एकदम से स्ट्राइक कर गया माइंड में, तो आपका ये क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा, विच इज गिविंग यू एम्पल टाइम फॉर लेंथी क्वेश्चंस। नाउ इस क्वेश्चन को भी आई वुड एडवाइस कि जरा पहले सारे बच्चे मुझे आंसर्स दें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन गामा, this is given as Cp by Cv, and temperature. You can reply on the chat box. Come on, students, you can answer it without using pen and paper. Okay, one option I got as option C. Anybody else? देखो सारे बच्चों को मैं एक बात कहूंगा कि भाई ये मत सोचो कि आंसर हमारा गलत होगा सही होगा। अभी यहाँ जेई मेन का एग्जाम नहीं हो रहा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जेई मेन के एग्जाम में आपको किन पॉइंट्स पे कॉशियस रहना है, जिससे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आती, जो आपको पता है, जितनी लर्निंग आपकी है, उसका आपको आउटपुट बेटर मिले। ओके, सेकंड ऑप्शन सी, राइट? एनीबडी एल्स? ओके, सी। ओके, तो मोस्टली जो वोटिंग है, आई होप इट इज सी। अब ठीक भी है, वी आर डीलिंग विद अ क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics is all about temperature, temperature change, heat exchange due to temperature change, temperature increment, temperature decrement. गामा के लिए रिलेशन पूछा है, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। अब थोड़ा सा ये मुझे समझने में डिफिकल्टी हो रही है कि आप लोगों ने सी क्यों दिया, डी क्यों नहीं दिया, बिकॉज डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड सी में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट एनीवेज, बट एक चीज सब लोग फिर मिस कर गए, गामा। This gamma is the property of a gas. Cp and Cv are the properties of the gas. So gamma is the property of the gas. For a diatomic, it is 7/5. For a monoatomic, it is 5/3. And hence, it is independent of temperature. जो मैंने पहले बताया ना, कंपटीशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन, नॉट सिलेक्शन। तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो, और जब आप कंफ्यूज होकर के जल्दबाजी में डिसीजन लोगे,
वहीं आपका +4 से -1। So the correct option is option A, because gamma is property does not depend on the temperature. Now, a second part, the second question, again from thermodynamics. फिर मैं सारे बच्चों से एडवाइस करूंगा, जरा एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और सिर्फ मुझे इसमें आप ये बता दो कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ गामा आई विल कंसीडर. Heat energy of 735 joule is given to a diatomic gas, allowing the gas to expand at constant pressure. Each gas molecule rotates around an internal axis but do not oscillate. The increase in the internal energy of the gas. Solution is simple. Q is given to you, that we will write NCP delta T. This N Cp is gamma into Cv delta T. Sorry. This is N gamma Cv delta T, and delta U, which is we have to calculate the value. This is simply NCv delta T. This is Q divided by gamma. Q is given to you already, 735. Just you need to tell me the value of gamma. Anybody can tell me the value of gamma? You can message in the chat box. Seven by 5. Okay. Option is C. ठीक है. 7 by 5. Anybody else? No, I'm not talking about the option. I'm talking about the value of gamma. This will be the value of gamma, the adiabatic exponent of the gas. So मैं इसमें भी थोड़ा सा easy कर देता हूं. Gamma would be 7 by 5 or 5 by 3. What will you choose? 7 by 5 or 5 by 3? But the okay, JNV Nalgonda is you have mentioned 5 by 3, but the gas is diatomic. For a diatomic gas, gamma is 7 by 5. But anyways, JNV Nalgonda answer is correct, 5 by 3, because it is mentioned around an internal axis. Rotates around an internal axis. That means जो भी इसमें rotational degree of freedom है, that will not be counted. And that's why we will consider gamma as 5 by 3. And if I substitute it 5 by 3, the answer you gave correct is C option, 441 joule. So once again, I am highlighting this point. Whenever attempting a question, please read the question very carefully. क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखने में होगा वो कॉमन लैंग्वेज जो हम जनरली फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट होगा. नेक्स्ट, come to this question. The law of equipartition of energy, the molar specific heat of a diatomic gas, constant volume where the molecule has one additional vibrational mode. Now, all of you must be have read about the degree of freedoms. Translational degree of freedoms, 3. Rotational degree of freedom, 3. Now comes the vibrational degree of freedom. अब इसमें अटेंशन ये देनी है आपको कि वाइब्रेशनल डिग्री का एक मोड है, लेकिन हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो उसके पास एनर्जी के देयर आर टू टाइप्स, वन इज काइनेटिक, वन इज पोटेंशियल. So every vibrational degree of freedom will constitute two modes for the energy, and hence the vibrational degree of freedom mode will be 2. Oh, I'm sorry.
The rotational degree is 2. So three modes for vibration of, three modes of translational energy, 2 modes of rotational energy, and 2 modes of vibrational energy. So the value will become 3 RT by 2 corresponding to internal energy, 2 RT by 2, and corresponding to vibrational mode, it is again 2 RT by 2. So ये पॉइंट सबको ध्यान रखना है कि अगर vibrational degree of freedom दिया है, so each vibrational degree of freedom will contribute to 2 degrees of freedom. And obviously the answer, you've guessed it right, the option B. Now, एक बार फिर से क्या सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे? A very jumbled circuit, big question. Or you can just message me, what is the first step you apply in this question? The first step. Whether it is a series parallel, whether it is a symmetry, whether it is a star delta transformation, whether it is a Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge, unbalanced Wheatstone bridge, or we need to apply Kirchhoff's law. First is elaborate. Okay. Anybody else? Come on, students. This is a PYQ. Okay, थोड़ा सा टाइम की पॉसिटी है because I have some few more questions to discuss. जब भी आपके सामने कोई भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और on a similar note इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का क्वेश्चन आए, always first focus on direct series parallel. सबसे पहले आपको ये ढूंढना है, इस चीज पर आपको फोकस करना है कि क्या इसमें कहीं डायरेक्ट सीरीज पैरेलल है या नहीं. Before applying anything, whether it is a Wheatstone bridge, whether it is a symmetry, whether it is a trans-symmetry, whatever, always first focus on to identify series and parallel. And you can easily see these two resistances are in series. These two resistances are in series. Also, if you focus, these two resistances are in parallel. These two resistances are also in parallel. And now you can reduce this circuit to a very simpler. This was 12. 1.5 and 0.5 in series will become 2. This 8 and 2, these are in parallel. Again 4 and 6, these are in parallel. Then comes 6. I take the second page. This was 12. This was 2. Here are 2 resistances. Now this one was 6, right? And here is the third resistance. This is 6. And here is 1 and 1, 2. Now there are these 2 resistances. In these 2 resistances, we have 2 things. One was 8 and 4 in parallel, and second one was 4 and 6 in parallel. So the value will come out to be 8 by 5 and 12 by 5. This is your point A, this is your point B. And now you can see easily. Please switch off your mics, please.
Now you can easily see that all these resistances are in parallel. तो जो क्वेश्चन आपको पिक्चर एक बड़ी दिख रही थी, ये बहुत डिफिकल्ट सा है. फर्स्ट ऑलवेज फोकस ऑन कि क्या इसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प राइट. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके सामने तीन फिगर्स हैं, 1, 2 एंड 3. माय क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में क्या पूछा तो बाद में बात करेंगे. फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, इन तीनों में से विच वन is balanced Wheatstone bridge? Out of these three, 1, 2, and 3, which one is the balanced Wheatstone bridge? Only 1, only 2, only 3, all. Okay, 1 is a balanced Wheatstone bridge, right? Next. और कोई बच्चा जो ऑप्शन देना चाहे? 1, 2, 3, all. Focus on my question. My question is, इन तीनों में से कौन कौन से सर्किट में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? दिस इज माय क्वेश्चन. जनरली सबको आदत होती है, जहां बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा, बीच वाले रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देंगे. ओके, तो this 1 ohm and this 1 ohm will not be removed. डिस्पाइट कि आपका रेशियो P अपॉन Q R अपॉन S इक्वल हो रहा है दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन आपका ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये इस वाले दोनों केसेस में रिमूव नहीं होगा. रीजन बीइंग कि whenever we draw a balanced Wheatstone like this, and if this resistance is like this, the battery connections are between these. This is P, this is Q, this is R, this is S, this is R1. And if P upon Q is R upon S, we say that R1 will be short circuited. There will be no current flowing in the resistance R1. लेकिन पॉइंट क्या है कि हम वो रेजिस्टेंस को यहां से रिमूव करते हैं जिस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के अक्रॉस देयर इज नो बैटरी कनेक्शन. If you see in the second figure, the resistance 1 ohm, although it is lying in between this combination, but the battery terminals are also connected across this resistance. So this resistance has a 3-volt battery in parallel with it. Similarly, in the second one, this 1 ohm has a battery terminal along with an additional resistance across its terminals. Means this 1 ohm has 3 volt and 1 ohm combination in parallel with it. So definitely current will flow in both these cases. Question is simple. You have to simply calculate the equivalent resistance, then you will apply the formula for the power and you can compare V square by R equivalent. But मेरा इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस क्या था कि Wheatstone bridge में while removing any resistance, while omitting any resistance, एक बार ये जरूर देखना है कि क्या वो रेजिस्टेंस बैटरी टर्मिनल्स के अक्रॉस तो नहीं है. अगर वो बैटरी टर्मिनल्स के अक्रॉस हुआ, यू कैन नॉट रिमूव दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. So next move on to, because time is limited, so I am quickly moving to the last question. This one, based on photoelectric effect. क्वेश्चन को देख करके
क्वेश्चन को पढ़ करके क्या आप लोग मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बता सकते हैं? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? एनीवन? वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एफ नॉट, threshold frequency. Given figure shows few data points in a photoelectric effect experiment for a certain metal, the minimum energy for ejection from its surface. Planck's constant is given to you. I just want to know the value of F naught. Anybody? Vertical axis पर you have the stopping potential. On the horizontal axis, you have the frequency, which is in the multiple of 10 to the power 14 hertz. I just want to know the value of threshold frequency, F naught. Because we have to apply the Einstein's photoelectric equation, corresponding to which we have the relation EVS is equals to HF minus HF. So I want to know the value of F naught. Anyone? Not the answer, only the value of F naught. At point A, the numerical value of frequency is F, and at point B is 5.5, at point C is 6. You just need to type the numerical value. Don't type into 10 to the power 14. That is understood. Come on, students. अच्छा चलो ठीक है, ऑप्शंस मैं बोलता हूं, जस्ट रेज योर हैंड्स कि कितने लोग उस बात पे एग्री करते हैं। क्या उसकी वैल्यू 5 है? एफ नॉट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 14। इफ यस, रेज योर हैंड्स। ओके, क्या वैल्यू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 14 है? 5.5 इंटू 10 टू द पावर 14। क्या वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 14 है? मतलब तीनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, सबने इस पर ऑप्शन दिया है। ओके, बट इसमें जो पॉइंट है वो है, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज 0। इफ यू रिमेंबर, जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं between the stopping potential and this frequency, the graph is like this. This point is F naught. But जब ये F naught होता है तो V का वैल्यू 0 होता है, because this graph is starting from the horizontal axis. And in this part, in this figure, the graph is starting from A. But यहां पर जो Y coordinate है 0, वो दिया हुआ है point B पर. So B is the point at which where we have the F naught, that is the threshold frequency. So threshold frequency now we have, and in the question जो इसने पूछा है हमसे minimum energy, that means it is asking us the work function. So what is the value for work function? That will be simply HF naught. This value will be in joule. We have to convert in electron volt. So we'll divide by 1.6, 10 to the power minus 19. So Planck's constant is given to you, F naught is given to you, and this conversion factor is known to you. You can very well now calculate the value of the work function, which is 2.27 electron. So मेरा बस इन क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट करने का जो बेसिक पर्पस था वो सिर्फ ये कि जब भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पढ़ें, spend sufficient time while reading the question. Don't read a question in hurry. या क्वेश्चन पढ़ते समय कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन मत बना लेना कि ये क्वेश्चन तो हमने पहले देखा था, उसमें ये पूछा गया था, ऐसे सॉल्व होगा।
एग्जाम के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सिमिलर तरीके से आपको दिखेंगे क्वेश्चंस, बट कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है कुछ ट्रैप्स हों, कुछ ट्विस्ट हों, और वही आपका स्कोर +4 से सीधे ले जाएगा -1 के ऊपर। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप जनरली रखते हो अंडर द कैटेगरी सिली मिस्टेक। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा सही, सब कुछ सही किया, सॉल्व भी सही किया, बट एक छोटी सी हमारी सिली मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से हमारे मार्क्स डाउन। एंड इन द लास्ट आई वांट टू शेयर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर योर फाइनल डे। जिस दिन भी आपका सेशन होगा, वेदर इट इज ऑन 27th और 28th और 29th और 1st February, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ऑल्दो these points are on the based on the experience of the जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे रहे हैं, बट इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। मोर और लेस चीजें वही हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। पहली चीज, बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल you will not be able to solve all the questions. It is a fact. Please understand this. So don't rush कि हमें 975 questions है, सारे के सारे questions के ऊपर फोकस करना है, सारे questions solve करने हैं। Please don't rush. The point is, JEE Main has negative marking. One question wrong, difference of 5 marks, and 1 mark costs you about 500 to 1000 rands. So imagine if you have solved one question wrong, marked the wrong answer, 5 marks difference will cost you around 5000 rands. So be careful because it has negative marking. So don't focus on all the questions. First focus on the questions जो आपको पढ़ के लग रहा है कि हम इजीली कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं। यू कैन एनीवे shuffle between the questions, you can anyway navigate between the questions. फिर एक जनरली बच्चों की धारणा होती है कि भाई 180 मिनट्स है हमारे पास, तो हम 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स को देंगे। नो, इन जनरल मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, लेंदी आता है। जो पास्ट अभी तक ट्रेंड है, इस साल चेंज हो जाए तो वी कैन से एनीथिंग, लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड है, सो मैथमेटिक्स में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। केमिस्ट्री ऑन अ रिलेटिव पार्ट इजियर होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक है या आपका कुछ ऑर्गेनिक का पोर्शन है, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मेमोरी बेस्ड होती हैं। तो अगर वो आपके मेमोरी में है, चीजें हैं, तो आप उसको क्विकली सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स आपका लगभग 1 आवर का टाइम कंप्लीट लेगी। फिजिक्स में कई सारे न्यूमेरिकल्स भी ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ सब्जेक्टिव मैटर। किसी को हो सकता है कि सर मुझे फिजिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत इजी लगता है, मुझे मेरी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हैं, केमिस्ट्री में मुझे याद नहीं होता। दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। बट मैं आपको एक ये रफ बता रहा हूं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वालिफायर्स। देन जो आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले आपको उन क्वेश्चंस को करना है विच आर इजी। सभी क्वेश्चंस का इक्वल मार्क्स है, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, इंडिविजुअल ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको रैंक मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए गैस तो बिल्कुल नहीं करने आंसर्स, नो गेस वर्क। Unless and until you are damn sure about the answer, don't know. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने कोई भी एक गलत आंसर मार्क किया तो इट विल कॉस्ट यू -1। कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे पेपर जब आपका स्टार्ट होगा, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पेपर आएगा, इट माइट बी पॉसिबल कि आपके सेट में जो 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो पहले लाइन से आ जाए, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, डोंट वरी। अनलेस एंड अनटिल यू रीच फ्रॉम 1 to 90th क्वेश्चन, आपको अपने पेशेंस, अपनी कामनेस को मेंटेन करना। एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके ऑप्शंस को जरूर देखना है, जैसा मैंने असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में हाईलाइट किया, उन ऑप्शंस को एक बार केयरफुली जरूर देखना है। कोई भी क्वेश्चन को करते समय रश मत करना, राइट? और ये भी नहीं कि क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लगा। मूव ऑप्टिमिस्टिकली। क्वेश्चन में एक बार ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, सो दैट की कैलकुलेशन में कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो।
शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट, जैसे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में आपके संग डिस्कस किया, रेजिस्टेंस वाले में डिस्कस किया, उन चीजों को याद रखना है सो दैट कि आप उसको क्वेश्चंस के ट्रैप में ना फंसो। और फाइनली जो भी आपका सेंटर हो, जस्ट गिव अ विजिट द सेंटर 1 day बिफोर योर एग्जामिनेशन, सो दैट कि वहां पर फिर आपको सेम डे पर कोई भी वो ना हो प्रॉब्लम। और एक बात, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, अपना जो भी आपका दिन होगा, जो भी आपका डे पे स्लॉट होगा, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द सेम साइकिल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो एग्जामिनेशन टाइमिंग हो इट्स 9 to 12, और इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी टाइमिंग हो 2 to 5। तो अभी जो बचे हुए दिन हैं, अपने आप को उस तरीके से साइकिल करना शुरू कर दो सो दैट कि आप इधर 9 to 12 के शिफ्ट में हो या 2 to 5 की शिफ्ट में हो, दोनों में से कोई भी हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में स्लीपी फील ना करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल। इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, you can feel free to ask me. Do we have any questions, Pushpa? Anyone? Anyone wanting to ask any question? Children, you can unmute yourself, and if you want to ask any questions. No questions? Anybody? You can also put it on the chat box. I would like to invite Mrs. Veena K. Sharma, PGT Physics from JNV Raipur, to give a vote of thanks. Yes, ma'am. Okay. Good evening to one and all present. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, Mr. Ankit Agarwal, sir, Deputy Director, Aakash Educational Services Limited, American India Foundation team, Vijay NVH headquarters, Arup Bhopal, Vigyan Jyoti coordinator teachers, and all dear students. Good evening to one and all. I'm Veena K. Sharma from JNV Raipur. I'm here to express my gratitude for the today's session. Agarwal sir, I have been attending your session since the beginning, and being a physics teacher, I would say that I enjoyed it a lot. Thank you, ma'am. Sir, as in the preparation of any examination, it's very important that you have the insight of the examination, because sometimes the knowledge and the intelligence fail when you don't understand the examination well. You rightly said that such examination like JEE is a kind of process of rejection rather than a process of selection. So your session, as you started with, and you told about the things, I hope that must have helped our student to understand this examination deeply and thoroughly, and to understand how to avoid this process of rejection in such examinations. Sir, you shared the topics, chapters from where most of the questions is asked, which is also very, very useful for the JEE aspirants of Vigyan Jyoti. You also shared and discussed about the new and latest changes by the NTA, which is again very, very useful, and I hope our students will make most use of it. My favorite part was the previous year questions discussed by you.
And I hope that our students, our JEE aspirants from Vigyan Jyoti, who are actively participating along with you, must have learned the way to think or to apply the concepts in solving such problems. Sir, being a physics teacher, I'm really amazed, and I am just to see how you could include such a wide range of questions, and you try to cover all the topics ranging from the rotational motion vector to modern physics, electricity, included everything, and a very good example of questions were discussed with the students. So I hope they must have understood it, understand the ways, the nitty-gritties of solving such problems, and utilize it and use it while giving their examination. Your D-Day strategy, very, very useful, sir. Thank you so much. I again would like to thank America India Foundation team, Vigyan Jyoti headquarters, and Aru Bhopal team for collaborating with you and organizing such important, relevant session. Thank you very much. I again extend my heartfelt gratitude. Thanks to the Vigyan Jyoti coordinator teachers who are very, very busy in the practical examinations. CBSE board practical examinations has started. And we have our JNVST examination day after tomorrow. So they are very, very busy. Still, they organize this and help our students in attending this session and taking the benefit of this session. So thank you very much. And last but not the least, our students, who I understand, we all understand that you are under huge pressure. The next week, JEE first session is going to start. Your practical is already have started. Some of the schools are conducting. At our school, we have the practical examination today and tomorrow both. So, and CBSE board examinations are there. You are under huge pressure, students, but this session must have given you a right insight into this examination, would have helped you in facing these challenges. So once again, thank you all. Thank you very much. Thank you, ma'am. sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank All you, the best, ma'am. children. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Indeed, that was a very wholesome session. I thank everyone. And with this, let's end this session. Thank you so much. Thank you, everyone, for joining. Have a nice day.